Hello everyone. Am I visible? Am I audible? Hello everyone. I'm seeing the light turning green and sometime some other color also. I'm just confused. Yes, I think it is working, right? Just say in the chat box yes if you can see me clearly. If you can hear me clearly, just say yes. I see Disa Wagle, Najam Sayyad, Chris Dubey, they all are saying yes, yes, audible, visible. Thanks for your comments. Okay, we are good to go then. So first of all, let me show you some kind of promotions. So save up to 25% on your Unacademy IITJEE subscription and beat the price like before May 19, right? You can use my code. You can use my code, which is Alok Sir Life. You can use my code. Then you have prepared for the CBSE exams with IITJEE subscription at never before prices. So you can check all the things. You can again use my code. And see, there are a lot of price reduction. So please take advantage of it and tell your friends also about it. They also might be getting that advantage. Then these are some of the rankers. Rankers summit on May 2021. So you see the name of the people who really ranked. So we have got AIR 1. So all names are there. Then Unacademy Enthuse 2 batch, Evolve 2 batch, and Neve 2 batch running. Then Yalgar 2 batch. JEE Mains and Preparation 2024. Then you have JEE Mains Predictor. That's all about it. And let me tell this one that if some of you, for those who joined late, I am Alok Kumar, a B.Tech from IIT Kanpur. I've been INMO Medalist. And I have 19 years experience of teaching IITJEE and Olympiad mathematics. And you can read other things in Google. And these are some of my courses. So AHA lectures by Alok Kumar and my courses are running. So you can check that. And now you come to today's session, which is actually differential equation. So today's session is about differential equation. And so first of all, we are going to do differential equations. A couple of words about it. This chapter is very scoring और इसमें आपको वक्त बहुत कम लगेगा, तो मैं चाहूँगा आप लोग तैयार कर लें. It does not take much time. अगर आपने रिवीजन कर रखा है, आपने अगर एक बार पढ़ रखा है इसको एक बार, तो it will not take much time to revise. Right? तो वो आप देख सकते हो. It don't take much time. There is some lag or what? I don't know. There is some indicator that says that CPU 11.7% and something. But let's hope it goes away. There is some data being captured. I mean, in terms of speed, so you will find something lag, some lag, but not much. Okay, let me start. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तुम्हें जो सॉल्व करना है, you will find that these all are really interesting questions and they have really come kind of in many exams. तो चलो मैं इसको ये करता हूँ. I will just let you do the things. So 2x square y dx. ज़्यादा तुम्हें इसमें मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन because that is what is asked mostly. So अब इसमें ऐसे करते, मान लो ये है 2x square dy plus e to the power y minus 2x dx is 0.
So first I'll write dy over dx, right? So dy over dx is 2x minus e to the power y upon 2x square, which I will write as x minus e to the power y by 2x square. As you can check that you are getting this one, 1 by x. So I can write dy over dx plus e to the power y times 1 over 2x square is x. And if you write cleverly, I can write this way, that I can write e to the power minus y this side. So e to the power minus y dy by dx plus 1 over 2x square is x e to the power minus y. This I can write. So now is the time to bring these things to this side. So I can write e to the power minus y dy over dx minus x e to the power minus y is negative 1 over 2x square. So just make a note of this transformation. ये आप देख पा रहे हैं कैसे आया? Nothing मैजिकल अबाउट इट. ये हमने कैसे किया कि पहले तो आपने डी वाई, कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, कोई भी दिया हो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज वेरी एल्गोरिथमिक सब्जेक्ट. तो आपका एम होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करें. तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना, द फर्स्ट गुड स्टेप वुड बी डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस पी ओवर क्यू. ऐसा पहले लिखो आप, तो माइनस पी ओवर क्यू, ये है ना, या डी एक्स बाई डी वाई, दैट डिपेंड्स कि लीनियर किसमें बन रहा है. लेकिन चलो अभी तो यह लिखते हैं माइनस पी ओवर क्यू. एंड देन आई विल ट्राई टू अरेंज फ्रॉम हियर. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अपन अरेंज करेंगे कि हाउ टू राइट इन अ फॉर्म विच मैचेस वन ऑफ द फॉर्म्स दैट इज प्रिस्क्राइब इन आईआईटी, लाइक लीनियर फॉर्म या वेरिएबल सेपरेबल या कुछ और, है ना, समटाइम एग्जैक्ट इक्वेशन, बट नॉट ऑल टुगेदर डिफिकल्ट, इजी वंस. ओके, सो दोज थिंग्स ऑल्सो कैन बी कीप इन माइंड. तो देखो ये ऐसा आ गया मेरा, मैंने ये नेचुरल स्टेप लिया, दिस नेचुरल स्टेप, ये बहुत ही नेचुरल स्टेप है. ज़्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसमें ना पड़ जाते हैं चक्कर में कि किसको लिखूं, किसको पीछे लिखूं, किसको आगे लिखूं, किससे डिवाइड करूं, किससे मल्टीप्लाई करें. इससे नहीं आएगा. यू मस्ट मेक स्ट्रॉन्ग हैबिट्स. वो हैबिट क्या है आपका, कि आप इमेजिन करो जो भी इक्वेशन रहेगा, फर्स्ट यू विल राइट डी वाई इक्वल टू माइनस वाई क्यू. जो दिखे नहीं दिखे, इससे धीरे धीरे चीज़ें बाहर आएंगी. मतलब फर्स्ट गुड स्टेप इज ऑलवेज टू राइट डी वाई ओवर डी एक्स इज माइनस पी ओवर क्यू. वो लिख लो पहले. चलो ये लिख लिया, तो मैंने ये किया, एक और पहला स्टेप ये हुआ. फिर ये ब्रेक किया. जब भी आपका रहेगा a प्लस बी ओवर सी, नो, क्या इसमें गुड है? ये गुड है कि आप लिख सकते हो a बाई सी प्लस बी ओवर सी. इमेजिन अगर c ओवर a प्लस बी होता तो क्या आप काम कर पाते? ये काम नहीं कर पाते, है ना, ब्रेक नहीं कर पाते ना. तो ये हिंट है कई बार कि अच्छा ये ब्रेक हो रहा है, तो मीन्स मे बी दे आर जस्ट ऑन द अदर साइड, मतलब रॉन्ग साइड और राइट साइड. आई हैव टू जस्ट मेक इन द राइट साइड. तो ये तुमने ऐसे किया, डी वाई डी एक्स ऐसा लिखा. अब ई टू पावर ई वाई, दैट इज अ ट्रैवलिंग थिंग, राइट. तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ऐसा आ गया. और फिर ऐसा, अब तुमने फिर इसको ऐसे लिख दिया. अब देखो क्या हुआ है. नाउ दिस इज, आई कैन रिड्यूस इट टू लीनियर फॉर्म. इसमें अब करेंगे क्या दिख रहा है मुझे, आई कैन सब्स्टिट्यूट नेगेटिव ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू टी, नेम सम अदर वेरिएबल. नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये भी पॉजिटिव लिख सकता हूँ, उसमें एक बार और नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो पहले ही कर लो यार. तो ये नेगेटिव बच जाएगा, एक स्टेप बचेगा. इट्स एलिगेंट ऑल्सो. सो आई कैन राइट ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स. ये आ गया आपका डी टी ओवर डी एक्स, करेक्ट, ऐसा आ गया डी टी ओवर डी एक्स. तो ये आपका आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स. जब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, लेट मी ऐड अ पेज. तो ये देखो डी टी ओवर डी एक्स आ गया यहाँ, डी टी ओवर डी एक्स. सम पीपल हैव सेड टू राइट ऑन नॉट विथ रेड, ऑन ब्लैक वन. तो ये आ गया आपका डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट है, डी टी बाई डी एक्स. और अब पीछे देखते हैं डी टी बाई डी एक्स, और ये माना है आपने, तो प्लस डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स टी, और ये इक्वल हो गया आपका माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, नेगेटिव वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, राइट. ऐसा आ गया, देख रहे हो. इज इट गुड? यू आर फॉलोइंग इन लव स्लोली विद द सब्जेक्ट. तो देखो डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स टी इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर है. दैट्स ऑल राइट. It was t over x, not xt, right? It was e to power minus y, and it was this step is not, this I have to remove. This is actually 1 over x. Look closely, this is over 1 over x. It could have been costly, right? तो ये आपका है 1 over x. In fact this is 1 over x. No problem, I can correct it. So negative 1 over x, so that it does not spill. और ये आपका प्लस, ये भी आपका आ गया प्लस 1 over x. तो प्लस 1 over x times t equal to negative 1 by 2x square. Now it looks all right, है ना. तो अब जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
वो आपका आएगा कुछ, वो कैसे करेंगे आप, और इसको सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स डी टी ना, आप क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हो आप एक्स डी टी, दैट इज बेटर, एक्स डी टी और प्लस टी डी एक्स एग्जैक्ट दिख रहा है -1/2x dx, करेक्ट, टी डी एक्स, तो ये आ गया d ऑफ टी एक्स इज -1/2x dx, ऐसा आ गया। तो आपका आ गया इंटीग्रेट करने पे टी एक्स इज -1/2 ln ऑफ मॉड एक्स एंड प्लस लैम्डा, ऐसा आ गया, करेक्ट। अब देखो क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन y equal to 1, y equal to 1. Now remember your t was e to the power minus y, if I remember, negative t is, आपका जो t था, जो सबसे t, your t was negative of e to the power minus y, correct. तो y equal to 1, so 1 पे, तो t will be minus e to the power minus 1, तो -1/e, ये आ गया t, तो आपका आ गया -1/e, and x is your e, x is e, and -12 or ln x, तो ln x is this much, is ln of x is ln of e again, and plus lambda, तो आ गया -1 is -12 plus lambda. So if you do this one, you will get lambda equal to -12, lambda is -12, तो चलिए लैम्डा इतना -12 आ गया, तो यहाँ पुट कर देते हैं आप, तो अब dx equal to -12 ln x and lambda is -1/2, और आपको निकालना है अब y1, they want y1, okay, no, so y1 you want, so x equal to 1, so you just write t first, t equal to, at x equal to 1, t equal to -12 ln x, so that is 0 and -12, तो t will be -1/2, और t आपका है negative e to the power minus y is -1/2, so you got e to the power minus y is 1/2. अब तुम जब ln लोगे तो आएगा negative y is negative ln 2, and so your y happens to be ln 2, तो y आपका आ गया ln 2, just check y is ln 2, y is ln 2, just check see y is ln 2, correct, y1 you want, so y1 is ln 2, so there might be some option and you can check that okay ln 2 is the correct one. तो इसको मैं रिव्यू करता हूँ एक बार, दिस इज जस्ट व्हाट आई डिड, लेट मी, या व्हाट आई डिड वाज जस्ट दिस वन, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन आई रोट इन द फॉर्म डी ओवर डी एक्स, एंड मुझे लगा कि ये लीनियर बन सकता है, तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट लीनियर। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, ये आप ले रहे हो डी ओवर डी एक्स, पी बाई क्यू लिखा आपने, ये ब्रेक हो रहा था ए प्लस बी ओवर सी, तो ब्रेक कर दिया आपने, देन यू जस्ट ब्रॉट द राइट पार्टनर्स टुगेदर, तो आपने वहाँ पे ऐसा लाया, इधर लाया, एंड देन यू सब्स्टिट्यूटेड नेगेटिव ई टू द पावर माइनस वाई टी, स्पेशल कमेंट ऑन नेगेटिव, सो दैट ये जो माइनस प्लस साइन है कंज्यूम हो जाएगा इसमें, तो वन स्टेप विल बी सेव्ड, अदरवाइज अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे, है ना। तो मैंने ये कर दिया और डी टी बाई डी एक्स आ गया, और फिर नेक्स्ट ऐसा आ गया डी टी बाई डी एक्स प्लस 1/x t, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है डी ऑफ टी एक्स 1/2x dx, और इस तरह करोगे आप तो आपको कंडीशन है y इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 1 t, तो अल्टीमेटली वी गॉट y इक्वल टू ln ऑफ 2. So this is the first example that we did and we got it. So I think that is clear. If that is clear, we can move to the next one. Okay. Next problem is this one. Again same है, देखो solution curve है, ये solution curve है इसका, okay, solution curve है of differential equation y plus 1 tan square, सी dx एक यहाँ पे एक यहाँ पे ना, ऐसे ही होता है ना, सारे चीज़ आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले क्या, यू हैव टू गैदर ऑल द थिंग्स, तो गैदर करते हैं इसको y plus 1, लेट मी चेक दैट दिस इज करेक्टली रिटन, यस, सो y plus 1 tan square x dx, तो पहले अगर मैं dx की बात करूँ तो मैं लिखूँगा y tan square x प्लस tan square x प्लस 1 dx, ये dx आ गया, और प्लस tan x dy, दैट इक्वल्स 0, so that is y sec square x plus 1 dx plus tan x dy is 0, this one. तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे dy over dx plus y sec square x plus 1 upon tan x equal to 0, right? That is dy over dx, ऐसा आ गया प्लस, तो मैं इसको लिख देता हूँ dy over dx, जो मैंने पहले बोला था dy over dx is minus y sec square x by tan x
और यहाँ पे आपका आ गया -1/10x, right? This is your thing that we get. So we can write this thing, and we can just write this way, that y equal to this one. Is that clear? Till here it is clear? Are you getting this one? Just check it. और आपका tan square x और भी था एक, तो tan square x से आपने डिवाइड किया है y square, तो दिस इज y tan square x plus sec square. This is just, no, this is not this one. I have to write actually y tan square x. So you have to write actually y tan square x plus sec square x dx and plus tan x dy. Be careful with these things. So dy by dx is negative of y tan square x plus sec square x over tan x. So I'm getting minus y tan x minus sec square x plus tan x. So we got this one. Now we can write dy by dx and plus tan x times time y. Y is with, no, y, you have got y tan square x plus tan square x and plus 1 plus, no, plus y. You have got, sorry about that, this is actually y. So y tan square x plus tan x and plus y, here it is y. So actually you will get y sec square x plus tan, lot of tan and sec plus tan x dy equal to 0. तो अभी तुम्हारा आएगा ये dy by dx equals negative of y sec square x plus tan square x whole divided by tan of x dx. So let me simplify this a bit. तो ये आ गया minus y sec square x by tan x and minus tan of x, ये आपका यहाँ पे आ गया ऐसा. तो मैं इसको लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में, अब इधर ले जाके इसको, तो मैं इसको करना चाह रहा हूँ. आई विल राइट, सो इफ आई एड द पेज आई विल हैव टू राइट dy over dx. तो ये है आपका dy over dx and plus sec square x by tan x y is negative of tan x. Now we know about this thing, that ये आप how can you write like now how you will write. Now we can write this way, that जो integrating factor linear है, right, is e to the power integral sec square x over tan x dx. तो e to the power, अगर मैं इसको tan x को u पुट करूँ u, तो I will get du over u. So e to the power ln of u, that is u exactly. तो ये आ गया tan x. So this is tan x. So now it means that the solution is y times if. Solution होता है y times, ये solution आपका है linear differential equation का, y times if. So y times if, that equals that minus of tan x times tan x integral dx, and don't forget this lambda constant. Okay, don't wait for the last thing. So y to the power y times tan x, ये आएगा minus tan square x. तो this is 1 minus sec square x dx plus lambda. So that is x minus tan x plus lambda. So y becomes x over tan x minus 1 plus lambda over tan x, right? This is your dy. Now given, see what is given. देखो ये क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है x 0 to pi by 2, करेक्ट, तो सही है हमारा सब कुछ. 0 डिवाइड से अब लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ऐसा देख रहे हो, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x y x इज 1. मतलब वो बोल रहे हैं लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x टाइम्स y x इक्वल टू 1. गिवन y x ही है ना, फंक्शन ऑफ x. तो मतलब इसका लिमिट, इट मतलब दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और x टाइम्स y x. सो x टाइम्स y x मीन्स x स्क्वायर बाई tan x माइनस x प्लस लैम्डा x बाई tan x. इसकी लिमिट निकाली है, जो लिमिट ऑफ कोर्स लैम्डा आ रही है, एंड दैट इज गिवन टू बी 1. तो इसका मतलब आपका y जो आ गया y x एज ए फंक्शन ऑफ x इज x बाई tan x माइनस 1 प्लस 1 बाई tan x, राइट. एंड व्हाट यू वांट नो y pi over 4. सो y at pi over 4 इज pi over 4 और ये माइनस 1 प्लस 1
So that is just pi over 4. So y pi 4 is pi 4 only. So this is again an example of linear differential equation. One of the most frequent occurrence ये आता है ना? तो keep in mind. Any doubt here? Anybody can ask any doubt? Then you can just ask. Okay, Manav, it is, I think now it is bigger. Now the writing is bigger or not bigger, or something, or it is better. This one it is better. Just give your opinion, all of you. Or let me try to write little bigger. Okay. So pi by 4 is the answer. नेक्स्ट सी ऑल आर डिफरेंशियल इक्वेशन और सभी अच्छे हैं. तो जरा एक बार आप देखो दोबारा. डी वाई बाई डी एक्स ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट. तो ये है डी वाई बाई डी एक्स इज 1 प्लस एक्स ई टू द पावर वाई माइनस एक्स. और ये देखिए नेगेटिव रूट 2 लेस देन एक्स लेस देन रूट 2 ये पहले ही दिया हुआ है. तो लेते हैं और मिनिमम वैल्यू निकालना है इसी इंटरवल पे वाई एक्स का, करेक्ट. तो लेट मी डिटरमिन द फंक्शन वाई एक्स फर्स्ट. वाई एक्स दिखता कैसा है आखिर, है ना. तो हाउ वी विल डू. So we can write like this, that पहले अपन क्या लिखेंगे इसको कि we'll just write this way, that dy by dx minus 1 is x minus 1 is x e to the power y minus x. देख रहे हो. तो I can write d of it immediately tells you that अगर ये लिखें अपन x times e to the power y minus x तो it works right. तो इसमें लिख सकता हूँ y माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू टी. मैंने लिख दिया t. तो ये आ गया dt ओवर dx इज x टाइम्स e टू द पावर t. इज दैट क्लियर. देख रहे हो क्या आ रहा है, dt ओवर dx इज सिंपल वन. बट ये मे बी मेन काम क्या है, मिनिमम निकालना. तो अभी ऐड करते हैं अपन. तो यू आर गेटिंग हियर दैट dt ओवर dx is x times e to the power t. देख रहे हो ऐसा आया वो x टाइम, ठीक है. तो आपने इसको लिखा e to the power minus t dt is x dx. you can integrate to obtain negative e to the power minus t is x square by 2 plus lambda. lambda constant है. and I think you have given condition also जिसे तुम lambda के लिए कुछ कर सकते हो, है ना. पहले इसको लिख लिया जाए. तो ये e to the power minus x by 2. और first let me calculate lambda if at all. So here t, remember t was y minus x. 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 My t. And now given what? Given is y0 is 0. y0 is 0. So x equal to 0. y0. That means t is 0. So minus t to 0. So this is minus 1. And this x square by 2, this is 0 plus lambda. So lambda becomes minus 1. तो आपका आ गया e to the power negative t is x square by 2 minus 1. So you get e to the power minus t is 1 minus x square by 2. This is a good form. अब देखो now it makes sense. Now it makes sense कि जो पेपर सेटर ने ये क्यों दिया. Why did they give this? इन्होंने ऐसा क्यों दिया. minus रूट 2 ये bound because तब तुम्हारा e to the power minus t you know is positive always. So you require 1 minus x square to be positive. Otherwise define नहीं होगा, इसलिए ऐसा दिया. तो that makes sense कि अच्छा ठीक है ऐसा आ गया. Okay, now I can take log. So minus t is ln 1 minus x square by 2. So this is x minus y is ln 1 minus x square by 2. तो आपका y आ गया x minus ln 1 minus x square by 2, right? ये आपका y है. तो y इज नोन एज अ फंक्शन ऑफ x. y पता चल गया. और निकालना क्या, ये देखो. तो निकालने का ये बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ y, करेक्ट. तो जब y आ गया, नाउ इट इज बिगर, हैंडराइटिंग इज बिगर. ऑल ऑफ यू लिटिल बिगर, लिटिल बेटर. सो y इक्वल टू दिस वन. अब इसको मुझे करना है तो मैं इसको आगे लिखता हूँ y इक्वल टू x माइनस ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. सो डिफ्रेंशिएट. सो आई राइट dy by dx which is same thing as here. I need not write this dy by dx is here 1 plus x, correct. This is here 1 plus x e to the power minus x. तो वो भी लिख सकता हूँ dy by dx is. जब तुम्हें आ ही गया है तो दो तरीके से करते हैं.
1 माइनस ln, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और ये माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। तो यू विल गेट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सो विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. सो आई कैन टेक, आई वुड लाइक टू टेक नेगेटिव आउट, तो 1 बाई 2 लिख देता हूँ इसको मैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लिख देता हूँ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. दिस आई विल नॉट लीव, दिस विल बी इंटैक्ट. तो ऐसा मैंने कर दिया, नेगेटिव हाफ. तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ 0 हो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज 0, सो एक्स इज नेगेटिव b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2, विच इज 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 ओवर 2. तो आ गया 1 प्लस माइनस रूट 3. बट रिमेंबर x was between minus root 2 to 2, तो x equal to 1 plus root 3 does not work, x equal to 1 minus root 3, this does work. ये वर्क करेगा, है ना, करेक्ट है, ये वर्क करेगा. तो ये वर्क करेगा माइनस रूट 3. अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका साइन देखना है ना, दिस इज वर्किंग ऑलराइट माइनस रूट 3. अब डी वाई डी एक्स आपको निकालना है, यू कैन फाइंड डी टू वाई ऑल्सो, बट वो मत करो, आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू. तो ऑफकोर्स एक ही वैल्यू आ रही, तो आप एग्जाम में मार सकते हो, देख रहे हो, मिनिमम वैल्यू एक ही आ रहा है ना. क्रिटिकल पॉइंट इज जस्ट वन क्रिटिकल पॉइंट, यू आर गेटिंग जस्ट दिस वन, नथिंग एल्स यू आर गेटिंग. बाकी तो डिफाइन ही नहीं कहीं पे, तो वही तुम्हें मिलेगा केवल. तो यू आर गेटिंग y इक्वल टू 1 माइनस रूट 3, एक्स इक्वल टू दिस वन. और जो y की वैल्यू आएगी, तब y की वैल्यू वो देखो क्या है. तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो है y इक्वल टू एक्स माइनस y इक्वल टू एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. तो x तो आ गया आपका 1 माइनस रूट 3 माइनस ln. इसमें पुट मत करो, ये देखो ये वैल्यू कैसे आया था, देख रहे हो यहाँ से आया था. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज माइनस एक्स, राइट. सी दिस फॉर दिस क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज नेगेटिव, उसी का रूट है ना ये, तो दिस इज जस्ट माइनस एक्स. तो ln ऑफ माइनस रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा ये. तो ये 1 माइनस रूट 3, तो आपको कुछ ऐसा आंसर आएगा, 1 माइनस रूट 3 माइनस ln ऑफ root 3 minus 1, correct. You can check that you can check that you are getting 1 minus root 3 minus this you are getting, right. तो पुट नहीं करो. अच्छा, लेकिन इसमें तो मैंने कर दिया, but then I did not tell you that why it is minimum, right. We want minimum value, right, minima. वो मैंने नहीं किया minima. कर सकते हो उसको, that is not difficult. It will take time but you can do. So उसको हम करेंगे d2y से नहीं करेंगे, we will not do d2y by dx2. इसमें लेंगे साइन स्कीम ऑफ डी वाई डी एक्स, वी विल गो बाई. तो मैं लिखता हूँ आगे डी वाई डी एक्स. सो टू मेक इट मोर दिस वन, आई एम राइटिंग डी वाई डी एक्स इज नेगेटिव ऑफ और हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 एंड अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. ये लिख सकता हूँ मैं. तो अब इसको आपने लिख दिया नेगेटिव ऑफ हाफ, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और इसको लिख दो x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फ़ा लेस देन बीटा, एंड सो अल्फ़ा इज़ 1 माइनस रूट 3 एंड बीटा इज़ 1 प्लस रूट 3. जस्ट चेक. और दिस वन, राइट, 1 माइनस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3. तो ये तो है ही नहीं डोमेन में, तो आपका डोमेन था माइनस रूट 2 टू रूट 2. अब मैं साइन देख रहा हूँ इसी इंटरवल में, इसमें एक ही रूट आया, वो रूट आ गया नेगेटिव 1, नॉट नेगेटिव 1 माइनस रूट 3, नॉट प्लस रूट 3. नाउ 1 माइनस रूट 3 ये अल्फा है, अल्फा, राइट. तो व्हेन x टेंड टू अल्फा प्लस, तो आप देखो इसमें साइन में माइनस हाफ, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और ये फैक्टर x माइनस अल्फा प्लस, तो ये पॉजिटिव है, और ये फैक्टर है नेगेटिव, तो अल्टीमेटली साइन आ गया पॉजिटिव. व्हेन x टेंड टू अल्फा माइनस, वो साइन नेगेटिव आ जाएगा. मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है. साइन ऑफ, जस्ट चेक इट लेटर, साइन ऑफ f प्राइम. तो f इज डिक्रीजिंग हियर, इट इज डिक्रीजिंग हियर इट इज इंक्रीजिंग. सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, सो इट मीन्स 1 माइनस रूट 3 x नॉट इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा for this function. Is that clear? ये पार्ट नेसेसरी नहीं था, बट सब्जेक्टिव एग्जाम में या आईटी एग्जाम में एडवांस वाले में, जहाँ यू कैन हैव मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन वन चॉइस, दिस काइंड ऑफ रीजनिंग में बी इसेंशियल. राइट नाउ तो तुम ये करोगे ना,
when you got only one, then you could have understood that problem is amply clear कि क्या पूछना चाह रहे हैं. तो आपको you do not have to waste time, because actually time भी तो आपको लगता है करने में. But this is more scholarly approach क्योंकि you get exactly what you want. I hope this is clear. Okay. Let's move to next one. अच्छा, एक तो ये भी कर सकते थे, ये जो dy by dx है ना, ये मिनिमम के लिए, तो y तो आ गया आपका इतना, y इतना आ गया, और dy by dx तो यहाँ से करते हैं ना, dy by dx मस्ट बी 0, राइट. dy by dx 0 अगर लाना है तो आपको यहाँ से आता, आपका इक्वेशन था dy over dx is 1 plus x e to the power y minus x. चेक इट, ये था आपका. तो when dy by, this is just a new thought. तो when dy by dx is 0 implies minus 1 equal to x e to the power y minus x. So e to the power y minus x is minus 1 over x. करेक्ट. तो आप उसको ला सकते हो और कर सकते हो, बट ये ज़्यादा अच्छा ये रहेगा यहाँ पे ऐसे किया हमने, राइट. जीरो होने पे ऐसा होगा और उस जीरो पे ही होगा, इस नॉट वहीं पे आएगा, एक्स नॉट, राइट. दैट एक्स नॉट यू विल गेट. Okay, so your answer is this 1 minus root 3. Okay, let us come here. dy by dx is y plus 1, lot of y plus 1, and then you have got also y to 0, the value of dy by dx at x equal to 1 you want. This is essentially, I will give the hint because easy problem. So what you can write that ये y plus 1 है ना, तो now my variable will be y plus 1. तो मैं ले सकता हूँ y plus 1 equal to u. V better, y plus 1 equal to v I will write. Y plus 1, so y plus 1 equal to v substitution, and x equal to u, this one. So our equation becomes dv upon du is v square e to the power x square by 2 minus xv, right. So I think x is alright. Let me write x only. dv by dx. So x is x. So you have got dv by dx plus x time v is v square e to the power x square by 2. But we don't want v square here. तो मैं लिख सकता हूँ 1 by v square dv by dx plus 1 by v times x e to the power x square by 2. Again, put negative 1 by v equal to t. Not 1 by v because minus will come. So minus of dv over v square is dt by is minus dt is just dt. This is just dt. So we have got minus dt over dx plus 1 by v to the power x e to the power x square by 2. Minus is gone, I think, because this minus we don't want, it is here. So that's just the whole point. So ये आएगा आपका dt over, this is dt over dx plus 1 by v times x. So 1 by v was again t, so dt is plus x times t e to the power x square by 2, and this we can again this we can again write x square by 2. So just check that this will be done. Minus x t will be there. This is minus x square by 2. You can again have integrating factor and all those things, and you can cover it, right. So this you try to complete later. This is easy one, same as last one. Okay, I'll do a different one, variety one. Answer also is given, you can check later. Now this is nice. This one, sine tan inverse x, looks like a different, sine tan inverse x and sine cos inverse x. So first of all let me simplify. ये देखो fx है sine of, लग रहा है ना कि बहुत लंबा कुछ आएगा और you don't quite feel like doing it, but कर लोगे. Sine of cot inverse x whole square minus 1. तो इसको तुम लिख सकते हो sine of, say write theta, and this is sine of pi by 2 and theta always true square minus 1. तो ये आ गया 2 sin theta cos theta, ये आ गया sin 2 theta, करेक्ट. तो ये आ गया sin of 2 tan inverse x.
करेक्ट, और थीटा यहाँ पे आपने माना है tan इनवर्स x. So sine of 2 tan inverse x is there. So this is 2 sine. अब यहाँ देखते हैं fx का, ऐसा fx है क्योंकि -1 भी चला गया था. अब देखो dy by dx इतना है, dy by dx is dy by dx is dy by dx is half d by dx sin inverse fx, half d by dx sin inverse of fx. So this you will get as dy by dx is half, or d by dx sin inverse of x. Let's check what is that. D by dx of sin inverse of fx. So d by dx of, I'll write 2 dy by dx. This is 2 dy by dx. Let us check that what we are getting. So this is 2 dy by dx is d by dx of sine inverse and fx. So fx is sine of 2 tan inverse x. So fx is sine of 2 tan inverse x, and so I will just simply get here d by dx of 2 times tan inverse x. So dy by dx is d by dx tan inverse x. So tan inverse 1 by x. तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, बट आपको कुछ निकालना इसके बाद भी है, राइट ना. ये आपका आ सकता है बाद में. तो आपको निकालना क्या, जस्ट चेक. आपको निकालना है यहाँ पे, ये निकालना है y√3 is pi by 6. गिवन y√3 is pi by 6. तो y√3 is pi by 6 and you want y minus √3. So y√3 is given to be pi by 6. Correct. So dy by dx is d by dx, and you are getting this one. So let us check that once, that problem. Yes, that is d by dx sine inverse of x. So sine inverse of 2y. Okay, so simply if I integrate, no, I will get here d of this one. So I can get 2y. Better, this is still better. We'll write 2y equal to 2 tan inverse x and plus lambda, because sine will cancel. So 2y is sine inverse of sine. So 2y is 2 tan inverse x plus lambda. This we can get. And then we are already given y√3 at √3, and we want to find y minus √3. So y√3 I can get, implies lambda I will get, and then y minus √3, so I will get the final answer. Just check that later, that we have cleverly written this one, sine inverse sine. So d by dx to tan inverse x, and so this is 2y, just this much, sine inverse of sine, so that goes away, to tan inverse x remains, and you can have this later. Okay, let's go to next one. This is also one good thing, but still it is same kind of thing, differential equation. And y alpha beta, I mean that here alpha beta may depend, belong to R. Then you have to find this one. This is good one, multiple choice question, more than one choice, so you can check all the answers here. Let's come to here, solution curve of equation x square plus xy plus 4x plus 2y. So how I will write? Let me check that what we can write. So we have, first of all, I can rewrite it. A little reflection tells us that I can write x square plus 4x plus 4. तो ये x plus 2 का whole square plus x plus 2y times dy by dx is y square. So now x plus 2 को मैं लिख सकता हूँ u, x plus 2 I can substitute. So x, ये passes through 1,3 lies on it. So x plus, this is essentially again this one. So x plus 2 को मैं लिखूँगा u and y को भी, so I'm getting u square plus u भी
dv by du is y square, that is v square, राइट? ऐसा लिख दिया मैंने, है ना? अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखता हूँ इसको यू स्क्वायर प्लस यू वी, तो मैं लिखता हूँ यू स्क्वायर डी वी इज वी स्क्वायर डी यू माइनस यू वी डी वी. I can take common. If you check, I will take common, and v is common. So v is v du minus u dv. So I can write dv by v is v du minus u dv by u square. So this is dv by v is d of u by v. D of u by v. Just check that you are getting d of u by v. So d of u by v we are getting. Then we can translate that, and we can write ln of v is u by v plus lambda, ln of v. And so this equation, this question, ln of v. So this is ln of v is u by y plus v. So v is y. So ln of y I'll get like this, and then I can just write this one, ln of y. So ln of y, I can write ln of y. Ln of y is x by x plus 2 by y. Ln of y is x plus 2 by y plus lambda. And then we can find that it is processed through 1,3, then solution curve means 1,3 will give you lambda, and then you can find which of them holds. You'll find these two hold. Okay, let's go to this one. Y prime x. This looks like unknown function, but we can do it again. It's still linear. So linear, of course, occurred in majority. So I can write this as this. I can write as dy over dx plus g prime x times yx. I will write like this, and g prime x times gx, this one, and y0 is 0. So what I can do that I can write g prime x yx. So is g prime x. So is it that we can have some kind of integrating factor? We can have. So integrating factor is if is e to the power integral g prime x dx. So e to the power gx times k, right? E to the power gx times k, or e to the power gx is enough. K we write e to the power gx. So my answer is y times if. So y times e to the power gx is integral g prime x gx e to the power gx dx. So I will write now y times e to the power gx is g prime x gx is g prime x gx e to the power gx. If you take gx equal to t, you are getting e to the power t gx and t dt, correct? So this is by parts, it will become e to the power t. So it is t times integral e to the power t dt minus 1 times e to the power t dt. So t e to the power t minus et, right? So this we got. So this is good. We got at least some answer. So we got y into e to the power gx is e to the power t. So e to the power gx, e to the power gx, and t minus 1. So gx minus 1 plus lambda. Now again condition given y0 is 0. Y0 is 0. So just you can check that y0 is 0. We can check that y0 is g2 is 0. So we can write y0 is 0. So that will mean that you can find x lambda. You can find lambda, and once you find lambda, then you can determine these lambda constant, and then you can find y2 also. After lambda we can find y2 inclusively plane. Is that clear? Yes, is that clear? Any doubt here? It will take much time in reading first time,
But revision is easy in this chapter, very very easy. Means you can do revision in maybe 6-7 hours, because there are hardly there are 3 or 4 forms, right? And they are not difficult. They are easy to keep in mind, and separately also. So you don't run the risk of running them with each other. Okay, so this 0 is there. They are saying integrating factor of this is integrating factor of this. This is a different question. Integrating factor they want. Again, my submission is I will write the same way. So I will write dy by dx. dy by dx is minus of, or I can write x cubed minus 3x square tan inverse y times 1 plus y square. That is dy by dx. So I can write this as 1 by 1 plus y square dy by dx is x cube minus 3x square tan inverse y. So 1 by 1 plus y square dy by dx plus 3x square tan inverse y is x cube. This one. So now you can take tan inverse y is t. So it means you will get here 1 by 1 plus y square dy over x is dt by dx. So dt by dx plus 3 x square t is x cube. Now we know that now comes integrating factor, that is e to the power integral 3x square dx, and so e to the power x cube, like that. Just very easy problem, but I think you understood properly. Okay, any doubt here? So many people are watching and they are saying, okay, now e to the power x cube is correct answer. Now if cos x and sin x are solution of differential equation, a not even real constant, then see it is second order differential equation. So the theory says that if you get second order differential equation, if you got solution say y1 and y2 solution, or uv, right, you got solution u and v second order, so right, constant coefficient. So the general solution will be given by AUX plus BVX, right? 8 linear combination of U and V, AUX plus BVX. Because cos and sin are there, I can write y equal to A times cos x plus B times sin x. Why is this? And if this is true, then just a linear combo, so you will find that these all are true. See, this is A cos x plus 4. This A, B, D, all are the same form. This is not the same, this is product, this is not the same form. But these all are same, A, B, D are same, so we can quickly find these all are same. Means if you expand them and combine, you will get something times cos x plus something times sin x. One more thing that I need to tell you is this here, that these solutions U and V must be linearly independent. This is called linearly independent. Linearly independent. For that there is a method called Wronskian. So you calculate, you may read much about it in say like IITs. Certainly I did in first year. Okay, so you will do something called Wronskian. So Wronskian of f and g, that is fg, and then f prime g prime, and then you are making this value. So Wronskian of this system for us, for number 15, not 15, for this we have got Wronskian is cos x sin x minus sin x cos x, right? So this is your this one, and then when you write it, it is not 0, right? It is cos x plus, it is actually 1, not 0, and so they are linearly independent solution, Li. And if they are Li, then general solution is sum of these two Li's, A cos x, B sin x. So whatever you do, it will come in this form. So that is also one thing. Is that clear? Especially this linear dependence thing, linear independent thing. It is also a method for homogeneous equation of any degree. So these are clever choices.
Now given we have two independent solution of the differential equation, then additional solution are given. Again same thing. Additional solution means if you have got this one, then additional solution means yx will be lambda of ux plus mu of, or if I write lambda mu, better I can write k1 and so y of x, y equal to, or y of x equal to lambda times ux plus v times plus mu times v of x, right? तब तुम बोल सकते हो कि ये ऐसा फॉर्म का होगा because it's linear combination, and then we can say that yes, this will come. Is that clear? It is same thing as previous study. Previously we did the same thing and we are doing same thing here. So you have to go by choices and see that if there is more than one choice, then also it is correct. Here they are saying A and B both are correct. A is certainly correct because 5ux plus 8. B is also correct because वो C1 ux है ना, B x तुम लिख सकते हो इसको B को C1 plus C2 C1 ux. You can also write it as C1 u times x ux and plus C2 minus 1 cx and C2 minus 1 vx. And this you can do always and you will get the result. Okay, let me go to the next one. 25 solution of this. This has got a method that we can find first of all. Not typical in JEE syllabus, but something can be asked. That's the equation you will find. You will find 25 m square minus 10m plus 1 is 0. You will get 5 minus 1 whole square is 0. 1 by 5, right? तो अब जब ऐसा रहेगा ना तो yx तुम्हारा जो आएगा वो, अब तो दो बार लिखोगे नहीं तुम, एक ही है, तो लेट c1 plus c2x times e to the power 1 by 5x e to the power x by 5 I think, x by 5. Just check c1 plus c2x you are getting like this, e to the power x by 5 because 1 by 5 is the root, so the power x by 5 yx. Now we can get these values of coefficients c1 and c2 by initial condition and you can write that. Is that clear? Normal to a curve at P meets the axis at G. Normal to a curve at P. चलो अभी देखते हैं, ये ज्योमेट्रिकल लग रहा है, तो normal to a curve, ठीक है, कोई कर्व है, normal to a curve at G. So normal to a curve at P meets the axis at G, तो मतलब ये ऐसे मिल रहा है, PG में मिल रहा है, PG, करेक्ट? यहाँ से कुछ आप करना चाहिए, PG. Now distance of G from origin, तो G P का इक्वेशन लिखो पहले. So write equation of normal. तो equation of normal becomes the slope of m tangent is minus dy by dx. Slope tangent is dx by dy is 1 by, this is y1, we call it minus y1. This is dx by dy, so 1 by y1, 1 by y1, right? Tangent and normal. Tangent is this much. Tangent, I mean this is just dy dx, not why to write negative. Negative means it will come here. So I mean tangent is dy by dx, tangent, and equation of tangent I will call it y1. Equation of tangent is, I will use capital X. So xy, if it is normal, you have to use 1 by y1 is normal, 1 by y1. So x1 minus y1 y, correct? No minus is there, तो plus y, सही है? Just check करो एक बार, correct आ रहा है बच्चों? x1 x not x1 x, this is x plus y1 times y, and this is your, yep, this will pass through xy, this will pass through x plus y1 x, this one. और अब क्या है आपका, अब यहाँ के बाद आपका है कि वो
आप ये कह सकते हो कि इसको जब y इक्वल टू 0 लोगे हो एंड y 0, तो x क्या आ गया, x आ गया x प्लस क्या है देखो, x इज x प्लस y1x, that is x, or x plus y1x. Let me check that this is correct question, that version should be correct. Locus problem. Okay, so let me just so are you getting this one? This is coming. Just check that x plus y1 y is x1, and it is given that origin is twice the f of p. So it means that x plus y1 x is twice the f of x p. X is there. It means x y1 is x y1 is x is y1 y, this is y1 y, so you will get here x plus y1 y, not x plus y1 y, so x plus y1 y is 2x, तो आपका आएगा x इक्वल टू y1 y, तो x is dy by dx टाइम्स y, तो आएगा x dx माइनस y dy 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लैम्डा, राइट, इंटीग्रेट कर सके, देख रहे हो ऐसा आएगा, है ना, आ जाओ, है ना। तो ये इजी है, ये हाइपरबोला हो गया, ये हो गया हाइपरबोला। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हाइपरबोला हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या था, ज्योमेट्रिकली आर्गूमेंट, तो आपने पहले स्लोप लिखा इसमें, और इमेजिन यहाँ पे हमने यूज किया इक्वेशन कैपिटल एस कैपिटल वाई का, बिकॉज रनिंग पॉइंट लिख रहे हैं एक्स वाई, अदरवाइज देयर विल बी कंफ्यूजन, सो आई एम यूजिंग एक्स फॉर दिस एंड y for this, correct? Any doubt? आ जाएगा आपका, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर इग्नोर मत करो, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी एग्जांपल्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, यहाँ पे फिर इसमें मैंने कवर करा है आपको वो सवाल जो कि नॉर्मल कहीं भी मिलते हैं, और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है वो भी आते हैं, न्यूट्रल प्रॉब्लम ने, उसके पहले मैंने करा आपको ज़्यादा वो सब सोल्यूशन कर्व, हाउ टू राइट सोल्यूशन कर्व, और किस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे निकाला जाए, दैट विल बी इन आर्ट, तो ये कर सकते हो आप। अदर्स ये सब भी आपका सही है, जो आपका होमोजेनियस इक्वेशन, इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। इनफैक्ट व्हेन यू गो टू IIT you will be doing this for entire thing, right? But then it is not very much in JEE syllabus, but then they may give you in choices, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे सॉल्व करने के लिए, सिलेबस में नहीं है, बट चॉइस दे सकते हैं वो, तो once choice is there you can make use of that. Okay, is that clear? Similarly you have other this also, same thing, independent solution. Independent means now they are this one, that independent is the ABC independent, correct? And linear independent solution, I tell you about Wronskian, you can check, they are only given that it is there, then it means that don't check, just write that u, some u times some v, all the things, okay? Then this was about changing form, a causes b sin, we can do anything, right? And even if you have something different, like this system is different, when you take cos sign, it will again be some a will change, and then cosine will come here also, here nothing will come, here also it will come, therefore, so only cosine sign will change, other will not change. Okay, is that all right? So my request to you will be not to miss this topic, is coding. I have taken always coding topic first, like first we take 3D, to take vector, then this kind of thing. Okay, so differential equation, so I think these are small topics, and if you pay attention to it, it can be yours in short time. अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, आपको तुरंत आएगा आपका, आप एक बार चेक करके देखो कैसे ये होता है. Those who are doing first time, they may have a problem, otherwise people won't have a problem. Okay, okay then, so let us meet some other day. Stay safe, stay blessed. Thanks for listening, thanks for watching.